All right. So आज का लेक्चर जो है that is about variables or literals, assignments, sorry, not literals, identifiers. Variables or identifiers, assignments and literals. ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है और then we will continue with the database. So get the idea that whatever on the left side of an equal to sign is an identifier. Identifier can be variable, can be a constant, can be anything to which we can assign a value. The value that we assign is basically called literal. And that middle sign, equal to sign, is basically the assignment sign. And computer always assigns from right to left. So if अगर आप लिखते हैं 5 is equal to x तो वो wrong है, अगर आप x is equal to 5 लिखते हैं तो वो correct है, right है. So x is equal to a square plus 2ab plus b square is correct, but if we write a square plus 2ab plus b square is equal to x, that is incorrect. So assignment is always from right to the left. Now let's talk about literals especially. What did I tell you about literals? Literals are the values which are being assigned to the variables or to constants or to functions. Now the type of the data determines that how do we make up this literal. Literal बनेगा कैसे डिपेंड करता है कि कौन सी डेटा टाइप का. तो फर्स्ट करें कि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट और स्ट्रिंग. अब इसमें जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं यानी कि इक्वल टू के राइट साइड पे रखते हैं तो उसको आप डबल कोटेशन में सेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज इक्वल टू जफर. तो ये जो वैल्यू है जफर, इसको हमने डबल कोटेशन में रखा है. डबल कोटेशन से कंप्यूटर को पता चलता है कि जो लिटरल है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है. My subject is equal to computer science. All right. My school is equal to whatever. My address is equal to whatever. So whenever we assign a string, we put it in double quotations. Then we have character. Grade. My exam grade is equal to B. जब हम कैरेक्टर को स्टोर करते हैं तो हम या कैरेक्टर को वैल्यू बना के असाइन करते हैं तो हम उसको सिंगल कोट में रखते हैं. Quality is equal to A. Quality is equal to A.
तो whenever we need to put just one character as a value and we want to assign just that one character as a value, तो हम उसको single quote में रखेंगे. So याद रखें, a string is a collection of characters. Text is a collection of character. Like Zafar के अंदर Z भी एक character है, A भी एक character है, F भी एक character है, A भी एक character है, R भी एक character है. लेकिन अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को सेव करेंगे तो वो एक कैरेक्टर जो है उस पर हम लगाएंगे सिंगल कोट, और जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हम डबल कोट लिखेंगे. देन वी हैव डेट. लेट्स से डेट ऑफ बर्थ 10/9/95. ये डेट ऑफ बर्थ है. कंप्यूटर इसको, इस वैल्यू को नहीं समझेगा कि ये क्या है 10 - 9 - 95. कंप्यूटर तो इसको नहीं समझेगा बिकॉज दिस वैल्यू डजंट मीन एनीथिंग. अगर आप इसको डबल कोटेशन में रख देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा. दिस इज नो मोर अ डेट. तो हम क्या करते हैं, डेट के लिए इसको हैश साइन में बंद करते हैं, हैश या पाउंड साइन. डोंट कॉल इट हैशटैग, दिस इज हैश साइन. सेम गोज विद टाइम. Time of entry, that is 10/29. इसको भी हम हैश में सेव करेंगे. So whenever we save time or date, we put it in hash sign. हैश आपको पता है ना कि आपको ये 3 के ऊपर मिलता है. अगर आप shift 3 दबाएंगे, shift 3, तो आपको ऊपर मिल जाएगा. ऊपर जो नंबर्स वाली रो होती है उसमें बैठेगा. जब आप बूलियन सेव करते हैं यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, तो जो उसका लिटरल बनता है इज एग्जाम पास्ट, तो उसको हम लिखेंगे ट्रू. कंप्यूटर के लिए ट्रू डजंट मीन एनीथिंग दिस वे. एटलीस्ट डबल कोटेशन में डाल देंगे तो वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा. तो हम इसको भी हैश में रखते हैं. Qualified false is married false. That is how we save boolean. अब रह गए इंटीजर, रियल और करेंसी. इंटीजर है, इंटीजर एज इन होल नंबर्स. एज इज इक्वल टू 16. Count is equal to 103. This is integer. तो हम इसको बस एक नंबर लिख देते हैं. कंप्यूटर नंबर्स को डायरेक्ट समझता है. अगर वो रियल है या वो करेंसी है, दोनों सूरतों में आप फॉर एग्जाम्पल वेट 23.6 kg, height 1.2 meters, price is equal to 10.8 rupees or dollars. Discount percentage is equal to 3.75%. So जब हम रियल या करेंसी में डेटा को एंटर करते हैं तो हम डायरेक्ट बस पॉइंट बना के उसको डेटा को एंटर कर देते हैं. So this is all about what? Literals. The values which are being assigned. ये आपको एग्जाम में, सूडो कोड्स में, डेटाबेस में, हर जगह पर याद रखना है. ठीक है.
So हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर्स an identifier is a name that identifies it is a name that identifies a variable object function etc. Literals are the values being assigned to identifiers like name, class, etc. Identifiers like name and class. Then assignment. All the literals are assigned to the identifiers in right to left fashion. Computer only assigns this way. बेटा डेफिनेशन ज्यादातर अगर आएंगी ना तो मैचिंग के लिए आएंगी, लिखने के लिए नहीं आती। आपको मैच करना होता है कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई है, यू हैव टू मैच, सो यू विल बेसिकली बी आइडेंटिफाइंग इट। अब आप उसको वेरिफिकेशन नहीं होती बेटा कि वो सही है या गलत है, बस वो ये होता है कि आपको मिलती है और आपको मैच करना होता है, ठीक है। सो इन सूडो कोड left arrow is used for assignment, like a is equal to 3. In high level languages, equal to sign is used. All right. So
This is what I wanted to discuss before we go any further because it will be used. ठीक हो गया? अब हम चलते हैं आगे और अब हम करते हैं क्वेरी बाय एग्जांपल. क्वेरी बाय एग्जांपल क्या होती है? Database, every database has got a language. That language is called SQL. We pronounce it like SQL. SQL stands for Structured Query Language. That's another language like any other language. In high-level languages, we have got Visual Basic, C, Python, Java. In database, we have got just one language that is universal, and it is called what? SQL, Structured Query Language. That query language needs to be written, to be typed, so that computer follows it and finds you the data or do something for you in the database. But few of the languages like Microsoft Access, they allow you to extract the data or do something with the database visually. Such type of languages where these are not common, these are not sophisticated, this is a technology which is actually in its initial stages. तो हम कह नहीं सकते कि ये बहुत अच्छी चीज़ है. जैसे आपने विजुअल बेसिक का नाम सुना होगा. विजुअल बेसिक का मतलब ये है कि a lot can be done visually. कम से कम जो उसकी आउटर इन्वायरमेंट है, जो स्क्रीन होती है, जो यूजर इंटरफेस होती है, वो विजुअली सेट हो जाती है. उसके बाद आप उसका कोड लिख देते हैं. उसामा बेटे, मुझे आप अलग से टेक्स्ट कीजिएगा आफ्टर द क्लास, देन आई विल रिप्लाई. तो हुआ क्या कि ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें आप विजुअली ट्रीट करें और सिस्टम उस विजुअल ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे SQL in the background, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. उसामा, we are recording, it is going over YouTube, it is being recorded, it is live, so you can always watch lecture from yesterday and today's first half. ठीक है? So pay attention to the lecture, whatever is going on. If there are any irrelevant questions, please do not fire them right away. Wait for some time. ठीक है? Towards the end of the class. All right. So हम बात कर रहे थे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की. तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डेटाबेस बनाने में, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने में, डेटा मैनेज करने में मदद देता है. That software is basically Microsoft Access allows you to find the data. Finding the command that you write for finding is called query. जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं डेटा को डेटाबेस से फाइंड करने के लिए, बिकॉज डेटाबेस में तो हो सकता है कि हजारों लाखों के हिसाब से रिकॉर्ड हो, लेकिन आपको सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जो क्लास ए में है, उनकी परसेंटेज जो है वो 30% से ज्यादा है, आपको सिर्फ उनका चाहिए. तो आउट ऑफ so many million records you want to extract few. तो उन extract few के लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. उस स्टेटमेंट को हम क्या टर्म करते हैं? क्वेरी. अब आपके दो ऑप्शन, या तो आप उसको लिख लें या विजुअली बता दें. जब हम विजुअली बताते हैं तो जिस ग्रिड में हम बताते हैं उसको हम कहते हैं क्वेरी बाय एग्जांपल, QBE. व्हाट डू वी कॉल इट? क्वेरी बाय example. That is said to be what? QBE. QBE में ग्रिड होती है और that grid allows you. अब मैं आपको ना दोनों बताता हूँ, वो कमांड कैसे होती है और वो ग्रिड कैसे होती है. Let me share that screen with you.
अब देखिए ये डेटाबेस का टेबल है, इस डेटाबेस के टेबल में आप देखें कितनी सारी फील्ड्स हैं। इसका नाम है प्रोडक्ट, इसमें सप्लायर की आईडी आ रही है, प्रोडक्ट की अपनी आईडी आ रही है, फिर प्रोडक्ट का कोड आ रहा है, फिर प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, फिर अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो आ रही है, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट टू द कंपनी आ रही है, उसके लिस्ट प्राइस आ रहे हैं, मतलब हम उसको 13 रुपए 50 पैसे में बना रहे हैं और उसको हम 18 रुपए में बेच रहे हैं। रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल पे अभी हम बात करेंगे जब हम फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। अभी हमारे पास की कितनी क्वांटिटी है और क्वांटिटी का यूनिट क्या है, 10 बॉक्सेस 20 बॉक्सेस, डिसकंटिन्यूड अगर हो गई है तो हम उसको क्लिक लगाएंगे। जब हम इसको ऑर्डर करते हैं तो मिनिमम हम कितना ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, ये सारी फील्ड्स हैं। यानी कि अगर मैं आपको इस टेबल इसको दिखाऊं, तो देखिए ये इसके अंदर फील्ड्स हैं, फील्ड नेम ये है और इसकी डेटा टाइप ये है। अच्छा अब ये एक्सेस की डेटा टाइप है तो ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट नजर आएगी, आप उससे डिसीव नहीं होइएगा। ये ऑटो नंबर नंबर ही है, शॉर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट ही है, करेंसी करेंसी है, नंबर नंबर है, यस नो जो है वो बूलियन है, ठीक है, अटैचमेंट को आप छोड़ दें। तो ये फील्ड्स हैं, सप्लायर आईडी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट, लिस्ट प्राइस। अब आप खुद देखें, सप्लायर आईडी नंबर है, प्रोडक्ट आईडी नंबर है, प्रोडक्ट कोड टेक्स्ट है, नेम टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट करेंसी है, लिस्ट प्राइस करेंसी है, रीऑर्डर लेवल नंबर है, क्वांटिटी नंबर है, क्वांटिटी पर यूनिट टेक्स्ट है, either it is discontinued or it is being used, तो हम उसको कहेंगे yes no, यानी कि boolean है। that is how it works। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेरी डिजाइन करते हैं। क्वेरी के अंदर हमें जो टेबल चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट का, ये हमने ऐड कर दिया। अभी हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल आ गया। अब आप देखिए ये ग्रिड है, ये ग्रिड आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस ग्रिड को हम कहते हैं क्वेरी बाय एग्जांपल। व्हाट डू वी कॉल इट? QBE, क्वेरी बाय एग्जांपल। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, हमें सारी फील्ड्स का डाटा नहीं देखना। अगर सारी फील्ड्स का डाटा देखना है तो वो तो देखिए ये आपको टेबल में नजर आ जाएगा, ये सारी फील्ड्स का डाटा आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको देखें कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें 45 रिकॉर्ड्स, 45 रिकॉर्ड्स आपको देखने, आप देखें पूरे 45 रिकॉर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन मुझे सब नहीं देखना, मुझे सिर्फ नेम देखना है प्रोडक्ट का, उसकी अभी हमारे पास क्या क्वांटिटी है वो देखना है, और उसकी प्राइस देखनी है। क्या क्या देखना है? प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम को डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया प्रोडक्ट का नेम। तो अब देखिए इस ग्रिड के अंदर कितनी लाइंस हैं और उनके क्या क्या नाम है। ये है फील्ड, कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट करी है वो। ये है टेबल, किस टेबल से सेलेक्ट करी है, इसका क्या नाम है? प्रोडक्ट्स। फिर आप क्या डाटा को सॉर्ट करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, या जिस ऑर्डर में डेटाबेस में पड़ा हुआ है वही देखना चाहते हैं। तो हम अभी तो वही देखना चाहते हैं। शो पे अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं बाद में, और क्राइटेरिया पे भी बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। अच्छा, अब प्रोडक्ट का हमें नाम चाहिए, उसके लिस्ट प्राइस चाहिए और उसकी क्वांटिटी चाहिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और क्राइटेरिया में आप ये डालेंगे कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसके प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू $50 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू $50। अब आपको मैं एक मजे की चीज दिखाऊं, ये देखें, ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स आई हैं आउट ऑफ 45 जिनका नाम ये है प्रोडक्ट नेम, नॉर्थ विंड ट्रेडर्स मार्मलेड, नॉर्थ विंड ट्रेडर्स ड्राइड एप्पल्स।
लिस्ट प्राइस इसके क्या है 81 और 53 और इनकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 40। और आपको एक मैं मजे की चीज दिखाऊं कि इसके अंदर आप इसकी क्वेरी जो है वो देखिए ये रही, ये इसमें छोटी सी नजर आ रही है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखें क्वेरी जनरेट हुई है, सेलेक्ट करो प्रोडक्ट्स के टेबल से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स के टेबल से लिस्ट प्राइस, प्रोडक्ट्स के टेबल से क्वांटिटी, फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट जहां पर वेयर प्रोडक्ट डॉट लिस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। दिस इज अ सीक्वल क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है। हमने तो ये नहीं बनाई ना, हमने तो सिर्फ ग्रिड में अमेंडमेंट करी। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंस वी आर डूइंग इट ग्राफिकली ओवर ग्रिड और सिस्टम जो है उसको खुद ब खुद पीछे जनरेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वेरी बाय एग्जांपल। हमने क्वेरी तो बनाई लेकिन वो एग्जांपल के थ्रू बनाई है। ठीक है, तो हमें तो ये देखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी वो देखनी है, ग्रिड। अच्छा, अब मैं क्राइटेरिया पे बात करना चाहता हूं। अब देखिए क्राइटेरिया में हमने क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, लेकिन मैं इसको देखना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट का नाम और उसकी क्वांटिटी मेरे सामने आ जाए लेकिन प्राइस ना आए। लेकिन मैंने देखिए उस पर क्राइटेरिया लगाया हुआ है, यानी कि अब अगर मैं इसको शो करता हूं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, देखिए उसमें प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, लिस्ट प्राइस भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रही है, लेकिन मैं इसको शो नहीं करता। तो ये जो फिल्टर है ना, सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाने का जो ग्रेटर देन 50 है वो तो लग गया, लेकिन नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? सिर्फ दो, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। अब हम इस फिल्टर को चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 20। अब ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएंगी हमारे पास, क्योंकि 50 से ज्यादा की हमारे पास कम प्रोडक्ट्स थी लेकिन 20 से ज्यादा की हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आउट ऑफ 45 जो है 13 जो है वो 20 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, और इसका मतलब है कि इसके अलावा सारी जो है वो लेस देन 20 है। अब इसी क्राइटेरिया को मैं चेंज करके कर दूं लेस देन और इक्वल टू 20, तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स अपीयर होने लगेंगी, क्योंकि लेस देन तो आपके पास ज्यादा है, आपके पास लेस देन 32 है। So do you get it? What is criteria? Criteria में हम filters लगाते हैं। List price from the table products only where we have got less than or equal to। अच्छा, अब आप देखिए क्राइटेरिया अंडर एवरी फील्ड आ रहा है, अंडर एवरी फील्ड। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास लिस्ट प्राइस भी आ रहे हैं, क्वांटिटी भी आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स आए जो कि लेस देन और इक्वल टू 20 वाले प्राइस हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो हो ना वो हमारे पास 10 से ज्यादा हो, अंडर 10 ना हो। तो अभी एंड अभी देखिए आप मेरे पास जो कितने रिकॉर्ड्स है 32, मींस शो मी प्रोडक्ट नेम, list price and quantity for the products where the list price is less than or equal to 20 and quantity is greater than 40। जब आप एक ही लाइन में लिखते हैं दोनों, यानी एक ही लाइन से लिखने से मेरी मुराद है ये देखें, एक ही लाइन में आप लिखते हैं यहां और यहां एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, इसका मतलब ये हुआ, एक ही लाइन का मतलब है बीच में एंड लगा हुआ है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। एंड है और नहीं है, एंड है। अगर आप इसी में इसको नीचे कर दें तो ये हो जाएगा कि लिस्ट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20 और
product quantity is greater than 40. अब हम इसको क्राइटेरिया को चलाते हैं. अब देखें हमारे पास 32 नहीं आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 18 आ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स whose price was less than 20 or equal to 20, there are only 18 out of 32. Last time 32 आ रहे थे. Out of 32 only 18 has got the quantity in our stock greater than 40. ठीक है. अब मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं. अब ये इन 18 रिकॉर्ड्स का मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं, और ऑर्डर ये है कि जो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए, ग्रेटर टू लीस्ट, हायर टू लोअर. उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं क्वांटिटी में जाके, देखिए सॉर्ट क्राइटेरिया, सॉर्ट, मैं सॉर्ट कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब आपके पास देखें, सबसे पहले आपके पास वो प्रोडक्ट आ रही है जो 200 है, और सबसे आखिर में वो प्रोडक्ट आ रही है जो सिर्फ 50 है. तो ये डेटाबेस का टेबल सॉर्ट हो गया. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अब अगर आप क्वेरी देखें तो ये क्वेरी बहुत बड़ी हो चुकी है. ठीक है, इसमें ऑर्डर भी आ गया है, एंड भी आ गया है. देखिए ये एंड है ना, जो हमने लगाया था एक ही लाइन में लिखने की वजह से एंड लगाया था. अगर मैं ये इसमें से लाइन में से उठा के इसको अगली लाइन में डाल दूं तो ये और हो जाएगा. देखिए इसी लाइन में आगे क्या लिखा हुआ है, और, ये लिखा हुआ है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें डिफरेंट नंबर के रिकॉर्ड्स आएंगे. नंबर बढ़ गया, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस 20 से कम है, या ना और उर्दू वाला या, उसकी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो ज्यादा है 40 से, और हमने डिसेंडिंग भी किया हुआ है. So when you put it in a line, it is AND gate. When you put it, या AND logic. When you put it in different line, it is OR. ठीक है. अब मैं यहां से इस क्राइटेरिया को खत्म करता हूं और इधर ही आता हूं. एक ही फील्ड पे आप दो क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, या तो 20 से कम हो या 40 से ज्यादा हो. मतलब मुझे 21 से from 21 to 39, I don't want to check those products which are having quantity between 21 and 39. All I want to check those products which are either less than the price, which are either less than or equal to 20 or greater than or equal to 40. Let's see. और हम इसका जो क्राइटेरिया है वो असेंडिंग कर देते हैं और इसके क्राइटेरिया को हम खत्म कर देते हैं. हम सिर्फ प्राइस का क्राइटेरिया देख रहे हैं. तो अब हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी जिनके प्राइस जो है वो 20 के बराबर या 20 से कम है, या 40 के बराबर या 40 से ज्यादा है. देखें ये 20 से कम वाले, और क्योंकि मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है तो आप देखें कि आपको 20 के बाद, देखिए 19.5, 20 के बाद 40 ऑनवर्ड्स मिल रहा है. तो 20 के बाद आपके पास 40 तक बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया ही ऐसा था कि या तो 20 के बराबर कम हो या 40 के बराबर या ज्यादा हो. तो बीच वाला मुझे चाहिए. सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई क्राइटेरिया ओवर डिफरेंट फील्ड्स with or operator like in different lines, or with and operator like in both lines. अब in same line. सेम लाइन का मतलब ये भी और ये भी हो तो उस वक्त रिकॉर्ड नजर आएगा. और अलग लाइन का मतलब ये है कि ये हो या ये हो. तो आप मेरी 3-4 चीजें आप समझ गए. नंबर 1, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो फील्ड्स जो आपको चाहिए. अब आपके पास डेटाबेस में एक ही टेबल का सिलेबस है ना, तो आपको एक ही टेबल, जो टेबल है उसका नाम आपको अंडर एवरी फील्ड लिखना पड़ेगा. फिर यहाँ पे आ गया सॉर्ट क्राइटेरिया. आप डेटा को जिस ऑर्डर में टेबल में पढ़ा हुआ है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो प्राइमरी की का ऑर्डर होता है, आपको उसी ऑर्डर में उसको देखना है, तो आप यहाँ पे सॉर्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपको कोई अपना ऑर्डर बनाना है, वो असेंडिंग भी हो सकता है. असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, ए से लेके जेड की तरफ. और या डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, या जेड से ए की तरफ. सर अगर हर फील्ड पे डिफरेंट ऑर्डर अप्लाई करते हैं तो बेटा इस पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, जब मैं पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहा हूँ.
हर फील्ड पे हम ऑर्डर अप्लाई करते नहीं है, हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है, अंडर सर्टेन क्राइटेरियाज हम डिफरेंट ऑर्डर्स अप्लाई करते हैं, उस पे हम अभी बात करेंगे जब हम पास्ट पेपर क्वेश्चन। आई वांट टू कीप एवरीथिंग स्ट्रिक्ट टू योर सिलेबस। तो फील्ड के नाम आपने चूज कर लिए, जो भी आपको चाहिए, पूरा टेबल आपको नहीं दिखाना, सर्टेन फील्ड्स दिखानी है, ये सिर्फ दिखाना है। दिस इज व्यूइंग। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यू। दिस इज जस्ट अ व्यू, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटाबेस, दिस इज जस्ट अ व्यू ऑफ दैट क्वेरी। टेबल में आपको उसी टेबल का नाम बार बार लिखना है। शॉर्ट ऑर्डर में आप सिर्फ ऑर्डर लिखेंगे उन फील्ड्स में जिन पे आपको ऑर्डर करना है, और ज्यादातर वो एक ही होगी। शो का मतलब ये है, अब हम फील्ड्स दो पर्पस के लिए चूज करते हैं, या तो हम उसको क्राइटेरिया में डालते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते, या हम दिखाना चाहते हैं। हमने फील्ड्स ले ली 4, उनमें से 2 हमने इसलिए ली कि हम उन पे क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे लेकिन उनका डाटा नहीं दिखाएंगे, और बाकी 2 को हम दिखाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी क्लास में जितने भी ए ग्रेडर्स हैं उनके नाम आ जाएं, तो मुझे ग्रेड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फील्ड क्या है, इक्वल टू ए। तो बार बार ए आए मुझे क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फील्ड चूज जरूर करूंगा ताकि उस पर मैं क्राइटेरिया अप्लाई कर सकूं, लेकिन उसको मैं नो शो कर दूंगा, शो के आगे अनटिक कर दूंगा, अनटिक। चेक बॉक्स खत्म कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, वो नजर नहीं आएगा। होगा, नजर नहीं आएगा। अब होगा नजर नहीं आएगा क्यों करते हैं हम सिर्फ उस सूरत में करते हैं ये, या अगर आपको ना है ना नजर आना है तो आपने उठाना ही नहीं है, लेकिन आप क्यों उठाते, इसलिए कि आप उस पर क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, दिखाते नहीं। उसके बाद क्या आ गया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो मैंने आपको समझा दिया, जो भी वैल्यू है वो आप दिखा सकते हैं। वो टेक्स्ट क्राइटेरिया भी हो सकता है, नंबर क्राइटेरिया भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। और अगर आपको क्राइटेरिया में एंड लिखना है तो आप क्राइटेरिया वाली लाइन में लिखते हैं, और अगर आपको और के साथ लिखना है तो आप डायगनली लिखते हैं। डायगनली ऐसे भी डिफरेंट फील्ड्स में और लगता है, और अगर आप एक ही फील्ड में और लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्वेरी बाय एग्जांपल। ठीक है, सो आई हैव told you enough for the database background, data types, backgrounds, identifiers, literal, assignment operator. Remember, assignment is always right to left. And now I have told you enough about the query by example. अब हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम सिंपली सारे पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपके साथ, जो हमारे पास बाकी टाइम है, आज मैं आपसे ये फाइल पास पेपर के क्वेश्चंस की शेयर कर लूंगा, आज का बोर्ड भी शेयर कर लूंगा, और आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फाइल जो है, मैं इसको आपके साथ अभी जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर कर लेता हूँ। और इस फाइल को अगर आपके पास, आप खोल लें अपनी अपनी डिवाइसेस पर, तो हम उसको साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे। लेट मी फर्स्ट ट्रांसफर द फाइल। ये ग्रुप का लिंक है, मैं दोबारा एक बार इसको इनपुट कर रहा हूँ। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फिर मैं 2 मिनट के बाद ये फाइल जो है वो ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगा। नाउ
ठीक है, ये मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर ली है फाइल, यहाँ पे मेरे साथ खुली हुई है। विश के आप इसको साथ साथ जो है वो सॉल्व करते जाइए। अच्छा, डू रिमेंबर कि आपके पास जो डेटाबेस है, आपके पास डेटाबेस एग्जाम और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एक टेबल वाला डेटाबेस है, जस्ट वन टेबल डेटाबेस। ठीक है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स आएंगे, सिर्फ एक टेबल आएगा। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस में उसी एक टेबल को डेटाबेस भी बोल रहे हैं और उसी एक टेबल को टेबल भी बोल रहे हैं। सही है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज है कि एक्चुअल लाइफ में तो ये होता है कि डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स होते हैं और हर टेबल का अपना एक नाम होता है, लेकिन आपके पास सिलेबस में क्योंकि एक ही टेबल है पूरे डेटाबेस में, तो जो डेटाबेस का नाम है उसी को इंटरचेंजेबली टेबल के नाम के तौर पे और टेबल के नाम को डेटाबेस के टेबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये आपका जो सिलेबस है 2210, ये कैम्ब्रिज ने इम्प्लीमेंट किया था 2015 में। तो 2015 से ऑनवर्ड्स जो लास्ट ईयर नवंबर तक 19 नवंबर तक क्वेश्चंस हुए हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। अब देखिए, अ डेटाबेस आपको जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये भी भिजवा दूंगा। वंस वी आर डन विद इट, फिर मैं आपको ये फाइल भी भिजवा दूंगा। अ डेटाबेस प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये डेटाबेस भी है और ये जो प्रॉपर्टी है ये टेबल भी है। क्योंकि ये दोनों एक ही है तो बस इस वजह से इसको इसके तौर पे टेबल के तौर पे और डेटाबेस बोला जा रहा है और टेबल के तौर पे दिखाया जा रहा है। अ डेटाबेस प्रॉपर्टी was set up to show the prices of properties for sale and features of each property part of the database is shown below. Property type, brochure number, number of bedrooms, number of bathrooms, garden, garage, prices in dollar. Give the number of fields that are in each record. मैंने आपको क्या था? A record is the collection of values under every field in a row. So how many fields do we have? We have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fields. That's your answer. State which field would you choose for the primary key? Obviously, I will choose brochure number for the primary key because that brochure number seems to be different for every property type. Yes, Faiza, you are right. That brochure number seems different for every property type. That is why I will name it as my primary key. Acha, give a reason for choosing this field. There is just always one reason for the primary key. All the items under brochure number are different for every record. That is why it is a primary key. State the data type that you would choose for each of the following fields. Let's see. Bangalore type, we can see this is text. Brochure number, this is text. Number of bedrooms, integer. Number of bathrooms, integer. Garden, yes, no, yes, no, yes, no, Boolean. Garage, yes, no, Boolean.
price in currency. That's not the big deal anymore. We have done it. So garages, yes, no, Boolean. Number of bedrooms, integer. Prices, currency. You get 3, 4, 5, 6 marks out of 50 marks. More than 10% just for one question. अब आगे आपके पास query by example. Query by example grade below selects all houses. You see, इन्होंने इसको select किया हुआ लेकिन show नहीं किया. क्यों select किया हुआ है? क्योंकि इस पे criteria apply किया इसलिए इन्होंने इसको select किया हुआ है लेकिन show नहीं कर रहे हैं. तो शो क्या होगा? प्राइसेस और ब्रूशर नंबर. और ये चीज याद रखिएगा कि जो कॉलम पहले है उसकी वैल्यू पहले आएगी, जो कॉलम बाद में है उसकी वैल्यू बाद में आएगी. ऐसे नहीं करना. हो सकता है कि प्राइसेस ऊपर टेबल में बाद में हो और ब्रूशर नंबर पहले हो, तो आपको टेबल से नहीं बल्कि क्वेरी के हिसाब से उठाना है. क्वेरी में फील्ड आगे पीछे हम देख सकते हैं. तो देखें आपको क्या बोल रहा है वो. आपको बोल रहा है कि शो करो प्राइसेस इन डॉलर एंड ब्रूशर नंबर. सिर्फ ये शो करना है. और जो प्राइसेस आएंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी कि छोटा प्राइस पहले आएगा, बड़ा प्राइस बाद में आएगा. 5 रुपए पहले आएंगे, 9 रुपए बाद में आएंगे. तो आपको क्या क्राइटेरिया क्या है? हाउस भी हो, बेडरूम 2 से ज्यादा हो और बाथरूम 1 से ज्यादा हो. और ये सब बीच में एक ही लाइन में लिखा हुआ है. तो दिस एंड दिस एंड दिस. So property type should be house and number of bedrooms should be greater than 2 and number of bathrooms should be greater than 2. तो अब एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो. So हम देखते हैं प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो इक्वल टू हाउस है. तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी इक्वल टू हाउस है वो ये है, ये है, ये है और ये. ठीक है, ये हो गया हाउस. फिर दूसरा क्या बोलता है? नंबर ऑफ बेडरूम्स इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2, जस्ट ग्रेटर देन 2. नंबर ऑफ बेडरूम्स ग्रेटर देन 2, greater than 2, greater than 2, greater than 2. And then it says that number of bathrooms greater than 1. So greater than 1, greater than 1, greater than 1, greater than 1. अब हमें चूज कौन से प्राइसेस करने हैं जिनमें ये तीनों हो, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, दिस एंड दिस एंड दिस. और करना क्या है? प्राइसेस और ब्रूशर नंबर हमें करना है. प्राइसेस और ब्रूशर नंबर. प्राइसेस पहले आएंगे, ब्रूशर नंबर बाद में आएगा, जिनमें ये तीनों हो. अब तीनों देखें किसमें है? प्राइसेस और ब्रूशर नंबर. तो ये तीनों इसमें है, ये प्राइस और ये ब्रूशर नंबर आएगा. ये तीनों इसमें है, तो ये प्राइस और ये ब्रूशर नंबर आएगा. बाकी ये तीनों किसी में भी नहीं है. तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? पहले आएंगे प्राइसेस और फिर आएगा ब्रूशर नंबर. प्राइसेस क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले छोटे वाले आएंगे, यानी कि 399,000 और इसका ब्रूशर नंबर क्या है? H13. फिर आएंगे 450,000 और इसका ब्रूशर नंबर क्या है? H10. तो दैट इज योर आंसर. You get how many marks for it? 2. So this is a simple query. Show me price in dollar and brochure number for all the properties which are houses, have bedrooms greater than 2 and bathrooms greater than 1. In बीच में याद रखिएगा end लगा हुआ है. Show what would be the output. So this would be the output. This would be the output. अच्छा, अब ये कहता है complete the query by example grid below to select and show. जब देखें, जब तक select and show के अंदर चलता रहेगा, जैसे ब्रूशर नंबर भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, एंड आ गया ना एंड, तो इसके बाद बस ये आएगा. ये सेलेक्ट भी करने, शो भी करने. तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया ब्रूशर नंबर, प्रॉपर्टी टाइप,
एंड प्राइस इन डॉलर। जो आपके पास एक्चुअल नेम है वही लिखेंगे। ये तीनों किस टेबल से आ रहे हैं? प्रॉपर्टी से। Of all properties with garage below 200,000, इट मीन्स कि हमें गैरेज इसको तो शो करवाना है, फिर हमारे पास गैरेज भी, इसको शो नहीं करवाना। इसमें क्राइटेरिया क्या है? ट्रू, गैरेज ट्रू होना चाहिए। और बिलो 200,000 का मतलब है कि प्राइसेस जो है वो लेस देन 200,000 होनी चाहिए। अच्छा, जब आप क्राइटेरिया लिखते हैं ना तो उसके अंदर कॉमा वॉमा ये वो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हो गया एंड है ना, गैरेज बिलो 200,000, तो ये एंड है। तो ये आपने जो है वो क्वेरी यहां पर बना दी। क्वेरी कौन सी बना दी? क्वेरी बाय एग्जांपल। देखिए इसके बड़े मार्क्स हैं। इजान टाइप करो, रेज हैंड नहीं करो, टाइप करो, जो भी क्वेश्चन है वो अपना टाइप करो। सर गैरेज में ट्रू क्यों लिखा? इसलिए कि वो कह रहा है कि गैरेज होना चाहिए विद अ गैरेज। हर प्रॉपर्टी में गैरेज थोड़ी है, कहता है ऑल प्रॉपर्टीज विद अ गैरेज बिलो 200,000। मानूर आपको भी मैंने जवाब दे दिया। बिलो 200,000 का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए से कम की है और जिनमें गैरेज है। तो अब गैरेज में देखें ना आपके पास वैल्यू क्या है, गैरेज में तो ट्रू है या फॉल्स है। गैरेज में यहाँ पे देखें ना, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये रहा गैरेज। अच्छा, आप अगर यस नो से कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं, यस नो, यस लिखते हैं इक्वल टू यस। ठीक है सर, टेबल प्रॉपर्टी आगे गैरेज में। जी हाँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने कुछ बोला नहीं था, वो हमने करे नहीं। जी फिजा, आपको आ गई ये बात समझ में? अब देखें उसी साल का दूसरा वेरिएंट, ये मई जून 2015 P22 है, और ये हमारे पास जो था वो P21 था। हमारा जो वेरिएंट है जो हमारे एग्जाम में आता है वो P22 होता है। Give the number of fields 1 2 3 4 5 6 7. How many fields are there? There are 7 fields. डेटाबेस का नाम क्या है? मार्क्स। State which field you would choose for the primary key. So there are 7 fields. I will choose class ID because in class ID all the values which are given are unique in every random. अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आप कोई नंबर लिखते हैं कैलकुलेटर पे, देखिए ये कैलकुलेटर मैंने शो करा आपके पास, और अब मैं ये 0 0 0 0 0 0 50 बार भी मैं टाइप कर दूं तो 0 एक ही बार आता है, लेकिन जैसे ही मैं कोई डिजिट टाइप करूंगा तो वो 0 गायब हो जाएगा। यानी कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम 0 अकेला किसी डिजिट से पहले सेव नहीं करता अगर वो नंबर है। आप यहां पे देखिए
This number is having zeros in front of it. If it is integer, you cannot save this. These zero will get vanished. If it is text, only then you can choose this. All right. So if you see such values where there are zeros in prefix, these values are not integers. These are what? Text. Mind it. Integer does not save leading zeros. This is a database. Data is saved in it. And if it is integer or real or currency, leading zeros cannot be saved. Got it? Achha. Now this is OR. This is OR. Because it is in different lines. So show the names of all the students in ascending order whose history marks are greater than 60 or geography marks are greater than 60. So let's just first mark them. History marks are greater than 60 or geography marks are greater than 60. So history marks are greater than 60. Greater than 60 or geography marks are greater than 60. So these two, Paul Smith and Diana Abdur, will be output. But Diana Abdur will be output before Paul Smith because they have asked you to show it in ascending order. And they do not want you to show marks themselves, rather they just want you to show only name. So the answer would be Diana Abdur. And Paul Smith. In ascending order, although it is not in ascending order in the database, but it is appearing in ascending order. Complete the query by example grid below to select and show. Now these are two things, select and show names only. So student name, names only. Means there will be no other show tick. With less than 40 marks in both maths and English. Maths and English. Less than 40 marks in both. Means in both means this and this. And do they want any sort? No. So what is remaining? Just the table name. And what is the name of the table? Marks. I hope that you got the idea. You get 3 marks for it. All right. 2015. A picture gallery owner has decided to set up a database to keep information about the pictures he has for sale. The database table picture will contain the following fields: title, artist, description, catalog number, size, area in square meters, price, arrived, date, picture, arrived at the gallery.
Sold, whether picture is already sold or not. State what data type you would choose for each field. So title is what? Text. There is nothing given. It's just out of your instincts. You would have to feel that what type is better for this particular field. Artist, text. Description, text. Catalog number, maybe number. Which number? Integer. Size, number, integer. Price, currency. Arrived, it is the date. See what it says, that arrived is the date, picture arrived at the gallery, so date. Do not write date time, just date. And sold, whether the picture is already sold, so that is true, false. We call it what? Boolean. All right, so you get 4 marks for it. State which field would you choose for the primary key. Obviously, catalog number, because this would be, by far we see that a catalog number would be different, but the title of the picture can also be different. But that is our second choice, because two artists may form or produce a portrait by the same name. Who cares about it? ठीक है ना? But catalog number in that particular gallery will always be unique. So that is our primary. Give a validation check. So we will discuss validation checks right after the database in next class tomorrow. So we are not going to discuss these now. We will discuss it tomorrow. So complete the query by example grid below to show and to select and show. What we need to select and show? Catalog number, title, and price. Until unless you see and, it means that they will be shown. So catalog number, title, and price. These will be shown. Tick, tick, and tick. Of all unsold pictures by the artist Twister. Of all unsold pictures by the artist Twister. So this is artist, field artist, and sold. So artist is equal to Twister. Remember, the value which is in text will be appearing in double quotation. And sold is equal to, let's say, false. All unsold pictures by the artist Twister. So this is end. They both should be there. You get 5 marks for it. And what is the name of table? Picture. All right, so this is your answer. Okay. A motorboat hire company decide to set up a database to keep information about boats that are available for hire. The database table boat will contain following fields: boat name, model, engine number, engine power in horsepower, number of seats, life raft, whether there is a life raft kept on the boat, day, price of the day is higher. मतलब एक दिन के लिए जो किराया होगा वो कितना होगा. So boat name, text, data type,
Model text. Engine power 500 cc, 800 cc. So that is integer. Number of seats, integer. Life raft, that should be yes, no or boolean. Does that boat has life raft or not? And then we have got what? Day price. This is currency. Complete the query by example grid below to select and show boat name, model and again ना day price. बस आप तीन show करेंगे. Boat name, model and day price. ये आप show करें. Of a day hire for all the boats with 4 seats. It means that seats greater than with 4 seats. Seats equal to 4. And means same line, engine power greater than 100 horsepower. So greater than 100. All right. So now the name of the table was what? Boat. All right. So that's it. You got 5 marks for it. Now, a database staff phone was set up to show the telephone extension numbers for the members of the staff working in a department store. Explain why none of the fields in the database can be used as a primary key, because name can be repeated. Name cannot be a primary key because several persons working for the same company may have the same name. Go in your class and see, or in your school you see how many Alis are there. So many Alis. Ask for Ahmad, so many Ahmads. Department, since a company has got limited number of departments and everybody working in this same limited number of departments, so department name would be repeating. वो तो हो नहीं सकता यूनिक. और ऐसे ही एक्सटेंशन नंबर भी है. एक्सटेंशन हर बंदे की जो है वो नहीं होती, डिपार्टमेंट में होती है. तो सारे बंदे हर डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन कैसी होगी, तो एक्सटेंशन नंबर भी बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट हो रहा होगा. सो यू वुड हैव टू टेल दैट since name, department and extension are being repeated in several records, they cannot become the primary key. That's it. 2 marks. State a field that could be added as the primary key. Yes, that's a good question. So staff, this is the staff name. Since these are different persons, so you may call that staff ID. So this is J in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Everyone would have a different staff ID, like you have in your school different ID. You have, yes, Abdul Nafi, very good. Sir, इसमें हम prefixes नहीं लिखते like kg. नहीं बेटे, जो हम values डालते हैं उसमें units नहीं आते, कभी भी नहीं आते. आप pseudo code भी जब लिखेंगे ना, तो उसमें आप नहीं करेंगे ये units, आप नहीं डालेंगे. आप जब फील्ड का नाम लिखते हैं तो उसमें हो सकता है यूनिट्स आ जाए, लेकिन कभी भी आप जो वैल्यूज डालेंगे वो वैल्यूज रॉ डालती है. जैसा आपको डेटाबेस के अंदर वैल्यूज नजर आ रही है ना स्टोरी में, वैसी नजर आती है. वी नेवर यूज इट. सर फॉल्स या ट्रू में हैश नहीं लगाएंगे. अच्छा Hamish, this is a good question. When I told you that when we save true and false, we put a hash sign around it. We wrap that true and false in hash sign. That is true. But none of the marking scheme ever for database has shown those hash signs. So that is why I don't use them. All right. कि ये ना हो ना कि एग्जामिनर बोले यार ये तो ऐसा नहीं लिखा हुआ तो इसकी मार्क्स काट दो, तो इसलिए मैं नहीं लिखता. So hash signs are there for true and false in literal meanings, but as far as the marking schemes are concerned, they do not use it, so I don't use it. All right. We both are correct. अच्छा.
अगला क्वेश्चन, state a field that could be added as the primary key, so staff ID. Give a reason, we have given a reason. Use the query by example grid below. Now, there is a term that I need you to pay attention to, that is called group by. Group by is something like, let's say, we have got countries, Pakistan, America, Saudi Arabia, then Pakistan, then America, then America, then Pakistan, then Saudi Arabia. We have got these countries. Then we have got cities, Islamabad, New York, Jeddah, Karachi, Chicago, Houston, Sakhar, Makkah. Now I want to sort this in ascending order over the country. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So KSA would come first. KSA Jeddah. KSA Makkah. KSA done. Then IJK LMNOP, Pakistan would come. So Pakistan, Islamabad. Pakistan, Karachi. Pakistan, Sakhar. Then USA. USA, New York. USA, Chicago. USA, Houston. So this is ascending order in this. And this is in any order. Whatever the order was in the database, it is in that order. अब एक क्वेश्चन किया था, उमैमा फैसल said that sir अगर हर फील्ड पे डिफरेंट ऑर्डर अप्लाई कर दे तो ओवरलैप, क्या ओवरलैप होगा? तो बेटे उसका आंसर मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ओवरलैप नहीं होता, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट और नेम, उन्होंने यही बोला है ना, all the members of the staff, to provide list of all the members of the staff in alphabetical order, group by department. जब भी वर्ड ग्रुप बाय आएगा ना, इट मींस दैट देयर इज अ सेकंड असेंडिंग ऑर्डर। अब देखें ये ग्रुप बाय नहीं है, ये सिंपल असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं इसको ग्रुप बाय कर दूं, अब क्या होगा कि जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, केएसए, पाकिस्तान, 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 यूएसए, यूएसए एंड यूएसए, ये तो यही रहेगा। लेकिन केएसए में जो जद्दा और मक्का है, उसमें देखा जाएगा पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। लेट्स से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो मक्का पहले आ जाएगा, जद्दा बाद में आ जाएगा। पाकिस्तान में IJK LMNO PQRS, तो सखर पहले आ जाएगा, कराची उसके बाद आ जाएगा, और इस्लामाबाद उसके बाद आ जाएगा।
यूएसए में न्यूयॉर्क सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है, फिर ह्यूस्टन आ जाएगा और फिर हमारे पास शिकागो आ जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ, ओल्ड अप नहीं हुआ बेटे। जो पहला असेंडिंग ऑर्डर था ना डिपार्टमेंट, अब इसमें ख्याल रखना उन्होंने चाहे पहले ये बोला है कि नेम प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, तो अब आप बोलेंगे यार नेम पहले आना चाहिए। नेम पहले नहीं आना चाहिए, आपको पहले बड़ा वाला सॉर्ट करना है और फिर उसके बाद उसके अंदर सॉर्ट करना है। तो पहले सारे कंट्रीज सॉर्ट हो गए, फिर उसके अंदर जो सिटीज है वो सॉर्ट हो गए। तो इसको टर्म जो है द ग्रुप बाय इज हैविंग अ सॉर्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स, बट द लेफ्टमोस्ट फील्ड वुड बी द बिगर सॉर्ट। फिर उसके अंदर जो डाटा है वो अगली फील्ड में सॉर्ट होगा, फिर उसके अंदर डाटा अगली फील्ड में सॉर्ट होगा, फिर उसके अंदर डाटा अगली फील्ड में सॉर्ट होगा। दैट इज व्हाट इट डज उमैमा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट किया और इसको ग्रुप बाय किया है, ग्रुप बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप डिपार्टमेंट को जो है असेंडिंग ऑर्डर पे ग्रुप बाय करेंगे, सॉरी, और फिर उसके अंदर नामों को करेंगे। तो पहले डिपार्टमेंट नेम आएगा और फिर उसके अंदर जो एम्प्लॉइज होंगे उनके नाम सॉर्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मींस हैविंग मल्टीपल sort orders over different fields. I hope that you got it. Good, Umama, good. You asked a very good question, but it was before time, so I did not answer it and I rather deferred it for the later time. Now I have to describe it. So, group by means having multiple sort orders over different fields. तो पहला जो होगा सबसे बड़ा sort order होगा, सारी countries उसमें आ जाएंगी। हो सकता है country और फिर province और फिर city, तो पहले सारी country हो जाएगी, फिर उसमें province आ जाएंगे, फिर उन province के अंदर city आ जाएंगी। इस तरीके से we call it group by। Group by the department, and they both are ascending or staff from. So it was sort of a question which appeared for the very first time. Those who did not know it, they just crashed. चलें आगे चलते हैं, ये हो गया and you got 4 marks for it. Now a database sofa select was set up to show the price of suits, sofas and chairs for sale from an online furniture warehouse. Part of the database is shown below. Sofa, brochure numbers, number of seats, number of pieces, number of material, color, prices in dollar. So how many fields are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many records are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do not count this heading in the record number as this is the field name. How many fields are there? 7. Which field would you choose for the primary key? Brochure number. Why? Because it is having every value, every item different than others. State the data type for number of seats. So number of seats is basically integer and then prices in dollar currency. Integer and currency. You may write number in integer as well. ठीक है? अच्छा, what would it do? It will show description, price and brochure number. Pay attention to the order. Where the material is leather and color is cream, and it is in the same line. Material is leather, 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 leather and leather. Color is cream, cream and cream. So just 2 records qualify. Which are those? Recliner chair
and recliner sofa. And there is descending order in prices. So they want to check description, price, and brochure number. Description, price, and brochure number. Description, price, and brochure number. Acha, do not abbreviate or change the name of the fields. I am doing it for the sake of time. We have got less time, we have to cover a lot. So in exam, you have to write the same name as given in the field. Okay. So now description and prices. Prices in descending order. So means which one is costlier? Recliner sofa. So recliner sofa. Second one is recliner chair. So prices are 1200 and over here prices are 600. Brochure number is RS23 and over here it is RC01. You get few marks for it, about how many marks? Sorry, 5 marks for it. Wow. No, not 5 marks, 3 marks. Now here, complete the query by example grid below that shows what? Show brochure number, material, color, and price of all the furniture with seats, but these seats will not be shown. Number of seats है basically, ठीक है? अच्छा. Sofa select, sofa select, sofa select, sofa select, sofa select. With seats greater than or equal to 3. With 3 or more. Or you may write it greater than 2. So that would be greater and equal to 3 both. It's up to you. They have not asked for any order or anything. So you get 5 marks for it. So this is kind of easy marks. Give the number of fields. 1, 2, 3, 4, 5, 6. State the data type you would choose for each of the following. Play, that is text. Number of seats, stalls, number or integer. You may call it number. Prices, stall seats in dollar currency. The query by example grid below selects all the productions with more than 100 seats left in either the stalls or the circle. In either the stalls or the circles. Show the data and remember that plays in ascending order. So we are only going to show play and their performance dates, but the name would be in ascending order. Ascending order means A pehle, phir B, phir C, phir D, phir E. So what we are going to show, play and then date. So play and date, performance date. So what is the criteria? Where there are more than 100 seats in stalls or in seat circle. More than 100, that's it. Over here, this is more than 100. So this one, and this one. ये तीनों आएंगे. This is or, not and. अगर and होता तो सिर्फ वो आते जिसमें दोनों criteria match कर रहे थे. Since this is or, so every play and its date will be appearing on the screen where there is either of them, number of seats installed and number of seats in circle are greater than 100. So this would be what? As you like it.
and date is what? 1716. Second one is Macbeth, but Macbeth will appear later. First Julius Caesar, because it is in ascending order. What is the date? 22/7/2016, and then Macbeth. 14/7/2016. This is your answer for 3 marks. Complete the query by example grid below. All right. So let's read it. Field. Select all the productions, means play, with at least 6 seats left in the circle. And show the play, performance date, and prices in circle. In performance date order, means ascending. Performance date order would be ascending. Sorry. All right. With at least 6 seats left in the circle. So circle would be greater than or equal to 6. Circle would be greater than or equal to 6. And then play production. Play production, play production, play production. असेंडिंग का किस तरह पता चल रहा है? अच्छा बेटे, इसमें ना आप डिसेंडिंग भी लिख सकते हो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो. परफॉर्मेंस डेट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग भी डिसेंडिंग, तो दे डोंट माइंड इट. आप असेंडिंग लिख दो, डिसेंडिंग, बस उनको ये पता होना चाहिए कि आपने परफॉर्मेंस डेट पे ध्यान देके उसका ऑर्डर बनाया है नहीं. आपका सवाल बहुत अच्छा है हामिस, कि असेंडिंग का कैसे पता चला. और डिसेंडिंग लिख दो. उन्होंने तो एक बोला है कि ऑर्डर में होना चाहिए, वो ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ये आपकी मर्जी, आप जो भी मेंशन करो. And then they ask for the prices, price circle, and oh sorry, I have made a mistake. Seats आएगा, number of seats. Prices तो show करने, seats show नहीं करने. Greater than or equal to 6. ठीक है. This is the same question, so I am going to skip it. Same sort of question. Let's skip it. Let's solve this question. Complete, state the type of the field TV ID. TV ID is the type text. State the type of it and give a reason for your choice, because it is different for every TV that is being recorded in this TV stock database. It is, oh sorry, state the type of the TV ID and give the reason. Since it is having text and numbers in it, and this seemed like text because we cannot save it as number or as date or boolean, so thus it is text. And text can accommodate numbers, special characters, and letters, and everything which is over the keyboard. So the most suitable form is text. Complete the table with the most appropriate data type. So screen size. Screen size is number, obviously, integer or number. 3D, yes, no, boolean. Curved or flat, CV or FT, that is text. Internet, yes, no, boolean. HDD, yes, no, that is boolean. Price, that is currency.
And yet we have another ordinary question, but let's solve this. Use the query by example grid below to provide a list of all the curved screen TV that have a built-in hard disk drive. So make sure the list only displays TV ID, the price, and the screen size. In ascending order, screen size in ascending order. Screen and the price and the screen size in ascending order of price. Sorry. And then we would have to choose curved or flat. Curved or flat. So CV is curved, FT is flat. So they said list of all curved screen. So curved और flat, इसको हम कर देंगे criteria is equal to CV that have a built-in hard disk. So HDD, that is the name of field, I believe. Yes, HDD, yes, no, hard disk. We will like yes. All right. And what is the name of the database? TV stock. TV stock. TV stock. TV stock. TV stock. TV stock. All right. So that is it. Now this is a different sort of question. A database table sheep is used to keep a record of the sheep on a farm. Each sheep has a unique ear tag. Ear tag कान में जो RFID लगा देते हैं. EARNNNN means EAR तो हर जगह आ जाएगा. फिर आपके पास 0000 से लेके EAR9999 तक नंबर होंगे. कितने होगा ये? 10,000. 0 से लेके 9,999 तक नंबर आपके पास कितने हो गए? 10,000. N is a single digit. The farmer keeps a record of date of birth and the gender and the current weight of each sheep in kilograms. Field name 1, ear tag. ये कहते हैं नाम बताओ. Identify 4 fields required by the database. Give each field a suitable name and data type. अब आपको ख्याल करना है इसमें कोई स्पेस नहीं छोड़नी है. Ear tag. Type would be text. Second one is date of birth. Date. Third one is gender. Gender would be text. Weight. Weight would be what? Number. Number as in real. And then we have got what? Field name 4. Ear tag, single digit, probably got date of birth, gender, and the current weight of the sheep in kilogram. That's it. अच्छा, अब data type देख लेना. Data type हो गया, data sample. अब हमें data sample बताना है इसका. Data sample ear tag का हो गया EAR
1 2 3 4. Date of birth, data type is date. Data sample is 22/4/2016. Field name 3, gender, data type text, or you can make it character. Character would be the best suited data type here. Share. All right, and then data sample would be male. Remember single quote and so forth. Here आप कर लीजिएगा, ठीक है? State the field that you would choose as the primary key. Obviously, ear tag. Okay. So that's about it. All of the questions are more or less the same. There is this one question I need you to pay attention to. A database table trees is used to keep a record of the trees in a park. Each tree is given a unique number and is examined to see if it is at risk of dying. There are 900 trees. Part of the database table is shown here. So this tree number is TN091. So Tn is a must, and then we have n, means from 000 to 999 we can go for about 1000 records with prefixes TNN. TN000, TN001, TN002, TN003. We can go 1000 times. Now the question is, state the number of fields, leave it. The tree numbering system uses Tn followed by 3 digits. Tn followed by 3 digits, N. The numbering system will not work if there are over 1000 trees. Obviously it would not work. Describe with the aid of example how you could change the tree numbering system to allow for over 1000 trees. So what you would do, after Tn you start using, since the size of the text is fixed, that is 1 2 3 4 1 2 3 4 5 characters. What you have to do, instead of Tn you start using Tm. With Tm you would have another 1000. When it is left, then Tm, Lm, and Op, anything after T would work. सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है कुछ, कौन सा बेटे? ये वाला, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ. सर ये चैप्टर मैक्सिमम कितने डेज में फिनिश होगा? बेटे मैंने कल 1.5 घंटे की क्लास लिया, 2 घंटे की क्लास ले ली, खत्म हो गया. आज खत्म है, बस खत्म. कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. Why not string? Femininally. बेटे स्ट्रिंग और टेक्स्ट आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. जो हमारे पास मार्किंग स्कीम्स हैं उसमें एक हमारे पास जो है वो सिर्फ टेक्स्ट का वर्ड यूज होता है. तो मैं समटाइम्स बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम्स कंस्ट्रेंट मैं सिर्फ वो वर्डिंग्स यूज करता हूँ. ठीक है. अच्छा असेंडिंग का, अच्छा ये हो गया. सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? याद हो जाएगा. वाई एम इफ इट इज मेल एंड फीमेल, or this one TM, so you go for TA, TB, TC, it's up to you, not M. ठीक है. और अगर वो मेल फीमेल है तो हमने एक कैरेक्टर में मेल और फीमेल रख दिया, that is why. All right, why did we write M? What does that indicate? Which here in the last question, this M as in tree number. So this is another way. You make it TA, TB,
Since we have got two letters गुंजाइश, तो हम उसके अंदर कोई भी दो लेटर डाल दें. वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई अगर इन 1000 को अलावा आपको डालना हो तो आप क्या करेंगे? भाई हम ये करेंगे कि हम लेटर में चेंज डाल देंगे ताकि नंबर दोबारा रिपीट हो जाए उन दो लेटर्स के लिए. ठीक है ना? अच्छा. अरे आप ऐसे भी कर सकते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं ना ट्री को, तो आप दरख्त नंबर कर दें, DN, वो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा बेटे. इट्स अप टू योर इंस्टिंक्ट्स. दे जस्ट वांट टू नो दैट if you could make sense of it or not. All right. अब एक so these questions are more or less the same. I am going to forward this file in your WhatsApp group, and over I'm going to put the link under this video over the YouTube, so you can practice it. I will be sending both of the files, the one unsolved and the one that is solved by me, so that you could practice well. So that's about it for the databases. We have covered databases comprehensively. We have seen past paper questions. I'll leave rest of the questions to you and you solve them. More or less the questions appear the same way, and if there are any variation and you could find one, I have tried my best to discuss about any of the variations that appear in last 5 years. If you find another which I have not discussed yet, you can ask me a question. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Manu. I will see you tomorrow at 5:30.